Assalamu alaikum 3 class. Today we are going to start new unit number 4, food and diet. Students, we have skipped unit number 3, so we are going to start unit number 4. What is the difference between food and diet? What is food? Food is any edible thing is a food. कोई भी खाने वाली चीज़ वो food है. And diet is having a perfect proper nutrition, complete proteins, vitamins that food have, these all things is a diet. Diet वो खाना होता है जिसमें proper nutrition होती है, जिसमें complete vitamins होते हैं, protein होते हैं, lipids होते हैं, fat होते हैं, एक proper मिकदार के अंदर हर चीज़ पाई जाती है, वो होती है हमारी diet. Clear? Why we need food? We need food for two main reasons. There are two reasons to eat the food. First one is food gives us energy. When a car run out of energy, it stops, it need more energy. Here is given an example. First thing is food give us energy. Food हमें energy देता है. What is energy? Energy is the ability to do the work. हमारे अंदर जो एबिलिटी है किसी भी काम को करने की, वो हमारी एनर्जी है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? खुराक से. स्टूडेंट, हेयर इज़ गिवन अ एग्जांपल ऑफ कार. यू नो दैट कार मूव्स विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल. इफ़ द पेट्रोल इज़ फिल्ड इन कार, इट कैन वर्क अ लॉट, इट कैन रन अ लॉट. एंड इफ़ द कार has small quantity of petrol, so it can stop after some time, so it needs more energy to do the work. In same way, if we want to do a lot of work, we have to take a large amount of energy, and we get this energy with the help of food. Clear? Food is like our petrol. So food is like our petrol. जिस तरह कार के लिए, कार को रन करने के लिए, चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, we need energy to do the work. Clear? It provides us with the energy to keep going. We need energy for all the work that we do. We need energy to do all the works. For example, if we take the example of bird need energy to fly. We need energy to walk. We need energy to run. We need energy to eat. All the works that we do need the energy. If we have energy, we can do all the works, and if we haven't energy, we can't do any work. So food also keeps our body healthy. This is the second reason. First reason is food gives us energy, and second reason is food also keeps our body healthy. We have to be healthy to do all the works. If our body is healthy, then we can do the works properly. अगर हमारी body जो है वो healthy होगी, हम सेहतमंद होंगे, तो ही हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं. सो वी कैन गेट दिस हेल्दीनेस फ्रॉम द फूड. हम ये अपनी जो सेहत है, सेहतमंद ज़िंदगी जो गुजारते हैं, वो हम खाने से जब हम खाना खाते हैं अच्छे से, देन वी डू दिस. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट द राइट फूड्स, यानी डाइट. सो there is really important thing is that we have to eat the right food, proper food. That is our diet. सिर्फ खाना खाना ज़रूरी नहीं. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ईट द फूड. वी शुड ईट द राइट फूड, प्रॉपर फूड. दैट इज़ डाइट. सो स्टूडेंट्स, नॉट ओनली डू वी नीड फूड. हमें सिर्फ खुराक की ज़रूरत नहीं है. वी नीड टू ईट द इट रेगुलरली. वी शुड ईट द प्रॉपर फूड इन रेगुलर बेसिस. क्लियर? It is much better to have several small meals a day than one large meal a day. Students, we need small several meals in one day. हमें थोड़ी मिकदार में सारे दिन के अंदर खाना खाना चाहिए. प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाना चाहिए. सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, देन हम लंच करते हैं, देन हम ब्रंच करते हैं, फिर हम रात का सफ़र करते हैं. तो क्या है कि हम प्रॉपर एक शेड्यूल के मुताबिक खाते हैं, ना कि हम इस तरह से खाएं कि एक दिन में जस्ट हमने एक ही हैवी मील ले लिया और उसके बाद हम लोगों ने सारा दिन कुछ नहीं खाए. इट इज़ नॉट द परफेक्ट डाइट. सो द परफेक्ट शेड्यूल ऑफ डाइट इज़ दैट we should eat the several meals
small meals in one day. Clear, students? Now, your turn. Write down all the things you do each day that you need energy for. If you needed 1 liter of fuel for each of those things, work out how many liters of fuel you would need each day. Now students, it's your turn. If you need 1 liter of fuel of one work, make a list of your work that you do in one day and then count the fuel that you use in one day. Clear that? Now this is your turn. You will do it. Now pick up your notes. These are the questions related to your topic. Question number 1. Why do we need energy? Answer is here. For what 2 reasons do animals need energy? Answer is here. These are the 2 questions related to your topic. So learn them carefully and read the page very carefully.